and an attempt has been made to stop the the usual business of the House in the Parliament. As of now, the suspension is likely to also raise many more questions about how many usual business of the hours in the Parliament will be put to use when such kind of suspension by the opposition Parliament has become a norm whenever there is an issue which goes undiscussed. Back to you. Whenever there is an issue which goes undiscussed. Right, Simran, we will come back to you, and we are also awaiting that official stand that if at all, if there's a statement that comes in on part of the TMC or the Congress. But for now, here's a look at news and brief from across the country. मैंने कुछ देर पहले एक टीवी चैनल पर देखा है, गिरावट की कोई हद नहीं है, गिरावट की कोई हद नहीं है। आपके एक बड़े नेता एक सांसद के असंसदीय व्यवहार को वीडियो कर रहे थे। आपसे भी बहुत बड़े नेता हैं वो। मैं तो यही कह सकता हूं, सद्बुद्धि आए, कुछ तो सीमा होती होगी, कुछ जगह तो बख्शो, कुछ जगह तो बख्शो। All right, here's a look at news and brief from across the country. Calling out the politics of a parliament security breach, Prime Minister Modi at the BJP parliamentary meet said that the opposition MPs are rattled after dropping in the state polls, adding that opposition's conduct will ensure its numbers go down in the general elections, and that some parties, in a way, backing the security breach is as dangerous as the breach itself. As probe into Parliament security breach picks up pace, Delhi Police Special Cell recreated the exact scene of crime on Saturday. The inquiry panel will now be recording statement of the 8 security personnel as well, who've been suspended by the Lok Sabha Secretariat for the security lapse which happened last week. Alright, so the latest on the Parliament security breach, the crime scene was recreated by the Delhi Police Special Cell on Saturday. The inquiry panel will now be recording the statement of the 8 personnel who've been suspended. A day after NI crackdown on Rohingyas in JNK, the police conducted massive searches in the valley. This after FIRs have been lodged at various police stations, highlighting those accused of sheltering individuals from outside the nation. Posters featuring Bihar Chief Minister Nitish Kumar were put up in Patna ahead of the Indie Bloc Alliance meet that is slated for today. This is note the 4th opposition meet that would take place today. While there has been no consensus on who exactly is going to be leading the alliance, the discussion today will revolve around the seat sharing formula. Another infiltration bid was foiled by the JNK police and the BSF in a joint operation in Punjab. The BSF and Punjab police intercepted a suspected drone along with 1 packet of contraband items of heroin near a village in Amritsar. Meanwhile, severe waterlogging was seen in parts of Tuticorin district as the area received heavy rains under the influence of cyclonic circulation. Rescue operations are still set to be underway in Tirunelveli after heavy rains wreaked havoc in the region. Speaking on employment opportunities in Ayodhya, the district magistrate of the holy city said there's been a massive rise in employment opportunities over the past few months, further adding that in order to give employment opportunities to residents of Ayodhya, the government has started paying guest scheme which is being implemented at a large scale, providing employment to the people. President Draupadi Murmu extended her greetings to citizens on Goa Liberation Day. The president paid glowing tributes to freedom fighters who were the architects of the monument in the state's history.
Slipping into a very short break, coming up on the other side, sources suggest Kejriwal set to skip ED summons once again, cites Vipassana force. And yet another win for the Hindu side. Allahabad High Court rejects petition challenging Gyan Wapisi. The Ministry of Commerce, Government of India has conferred the National Award for Innovation on Amity School out of 10,000 schools in India with Atal Tinkering Labs, a testimony to Amity's focus on instilling scientific temperament and innovative spirit among its students. The Ministry of Commerce, Government of India has conferred the National Award for Innovation on Amity School out of 10,000 schools in India with Atal Tinkering Labs, a testimony to Amity's focus on instilling scientific temperament and innovative spirit among its students. Good to welcome you and your delegation again. We're fighting a war of civilization against barbarism. I can say that when we spoke, I expressed again our commitment, Israel's commitment to achieve total victory against Hamas. And we think that this is not only our war, but in many ways your war, because you are leading the forces of civilization in the world. This is a battle against the Iranian axis of terror, which is now threatening to close the maritime strait of Bab el-Mandeb. This threatens the freedom of navigation of the entire world. I appreciate the fact that you are taking action to open that strait. It's not only our interest, it is the interest, I think, of the entire civilized community.
Raucous sloganeering complete showdown in the parliament. More than 100 opposition MPs suspended from the Lok Sabha. Opposition stoops to a new low after suspension. Rahul leads mocking of Vice President. Jagdeep Dhankhar calls it shameful. Prime Minister Modi hits out at opposition, says India alliance frustrated after 3 states dropping. With over 100 MPs suspended, India alliance in huddle mode, now set to hold key meeting. Sources suggest Kejriwal to skip ED summons once again, cites 10-day Vipassana course. Yet another win for the Hindu side. Allahabad High Court rejects petition that challenged the Gyanvapi survey. And we start first up with the latest that's coming in on the Parliament winter session. Now, there seems to be no end in sight when it comes to the impasse that we have been seeing over the past few days. In news that's just coming in, the India Alliance is likely to boycott the remainder of the winter session starting today. In fact, note that the Parliament House has been adjourned given the ruckus and pandemonium that was seen in the House. In fact, 78 opposition MPs, 33 from the Lok Sabha and 45 from the Rajya Sabha, from both houses in a single day were suspended, and today as well all opposition MPs have been suspended. So several such, in fact, before we go across to Simran and Anuj, listen in to the reactions that have been coming in on Jagdeep Dhankhar being mocked at by Congress MP Rahul Gandhi and TMC MP Kalyan Banerjee. Right now, I'm reporting from the Makar Dwar, and behind me at the stairs of the Makar Dwar, all the opposition suspended member of parliament are protesting. Right now, it could clearly be seen all the opposition members, MP sitting at the stairs of the Makar Dwar. And let me tell our viewers that this is the main entry for all the member of parliament who go inside the parliament for both the houses, Lok Sabha and Rajya Sabha. This is the Makar Dwar. The name Makar Dwar could clearly be seen, and the opposition leaders have completely blocked the entrance of the parliament, the entrance for all the member of parliaments of the ruling party as well, by protesting and staging protest at the Makar Dwar. Gajendra Singh Shekhawat trying to go through this way, but he can't go right now from this way because of the blockage which has been created by the opposition leaders, and the placards in their hand could clearly be seen. So right now these are the visuals from inside the parliament, with opposition leaders blocking the route for the ruling MPs and also staging protests for their demands that HM should reply on the parliament breach security matter. Harsha Chandwani for Republic TV. Behind me could clearly be seen all the opposition leaders here at Gandhi statue, and opposition leaders are protesting. We are joined by TMC leader of Member of Parliament Saugata Rao. Saugata Dada, so today all the leaders are having protests at Gandhi statue, suspended 92 Member of Parliament. What do you have to say about it, and what opposition has now decided? Opposition has decided that protests should continue. That's why we have gathered at Gandhi statue. We protest against the undemocratic suspension of 92 members from both houses who are protesting against the security breach, also demanding the statement by Amit Shah. So this sort of protests will continue. After today's protest, we'll again decide on tomorrow's course of action. Saugata Rao, this issue will be taken up today in India Alliance meeting as well. The protest, the suspensions of the huge number of opposition leaders from both the houses. Yes, it will be taken up, but India Alliance has many other jobs to do, finalizing sheets sharing and all that. So they've already given a statement and they'll take it up further. So today we can say that the remaining opposition leaders who are not suspended, they will again today raise the issue of breach and HM's reply in parliament. I think so.
So this is Saugata Rao speaking to Republic, and as we can clearly see, more and more leaders here have joined at Gandhi statue where they are protesting and clearly stating that 92 member of parliament have been suspended from both the houses of the parliament together till now in the entire winter session of the parliament, and the leaders could clearly be seen where they are stating that the remaining opposition leaders will raise the demand, and also stating that HM will have to reply in the parliamentary security breach matter, because this is not only the prerogative of speaker but also the prerogative of home minister as well. And behind me could clearly be seen the opposition leaders of all the parties, TMC, JDU, Samajwadi Party, Congress, all leaders are stating. We see Digvijay Singh is standing right now. Digvijay sir, one word on opposition leaders protesting at Gandhi statue right now. So what is the ahead strategy and road ahead for opposition? To save one man, they have suspended 92. Yes, sir. So this side. Yes, Yeah. sir. For one MP, to save one MP, they have suspended 92. Yes. So we want to complete 100. Complete 100. So you say that today again opposition will raise the same demand in parliament and the remaining leaders. It's a very valid demand. Shouldn't such a breach of security not be a matter of concern for the members of parliament? Should it not be a concern for the Home Minister of this country? Should it be not a matter of concern for the Prime Minister of this country? And this was a smoke gas. Supposing it was a lethal poisonous gas, what would have happened? But don't you believe if more leaders will be suspended, then the bills will easily be passed from both the houses as well? 3 important bills are left. This is the Modi model of democracy. This is what he used to do in Gujarat. He is doing it here. So this Digvijay Singh on opposition protest. Behind me could clearly be seen all leaders have gathered at Gandhi statue for raising their demand, and opposition seems to be united in the parliament beach matter and the HM to reply on this issue. Harsha Chandwani for Republic TV. Right now I'm reporting from Gandhi statue, and behind me could clearly be seen the member of parliament, opposition leaders who are sloganeering at Gandhi statue, and they are protesting here, stating that the MP who was responsible, whose guest came inside the parliament responsible for the breach, that MP Pratap Simha should be arrested, BJP MP should be arrested. And right now behind me is the Gandhi statue and the opposition leaders from all the party who have been suspended, because right now we know that the 92 member of parliament till now from both the houses have been suspended till the remaining winter session. And the visuals are behind me are from the Gandhi statue, where they are stating that HM should resign and the BJP MP should be arrested, and also they are seeking reply from HM on the parliament breach issue. Behind me, opposition leaders right now have placards in their hand, and this is the slogan from Gandhi statue, because opposition leaders are adamant on their demand of HM to reply on this, are adamant on their issue to reply on the issue of parliament breach security, and that is the reason why this protest has started at Gandhi statue. And opposition leaders have also stated that they will take up this demand, this suspension of MPs matter in the India Alliance meeting as well. And right now all the suspension MPs after the Gandhi statue protest will be moving towards Makar Dwar and will be staging protest by sitting at the stairs of the Makar Dwar. Behind me are all the leaders from all across opposition parties with placards in their hand, and the placard could clearly be seen where it is written, defeating silence, shielding culprits, speak UPPM. And this is what opposition leaders are stating from Rajni Patil, from Amy Yagnik, NK Premchandran, Manoj Jha, Dola Sen, Saugata Rao, A. Raja, leaders from DMK party, AIDM, from leaders from DMK party, TMC party, Samajwadi party, JDU, Congress, all are here. And right now, what we see here is that Mallikarjun Kharge and Sharad Pawar both have reached here at Gandhi statue. Sharad Pawar could also be seen here joining the protest at Gandhi statue. And the sloganeering at Gandhi statue continues with placards, with leaders holding placards in their hand demanding HM's reply and the arrest of BJP MP. Harsha Chandwani for Republic TV. अब वो देखेंगे, वो तो 3 बजे है, पहले ये समस्या को हल करेंगे,
उसके बाद में 3 बजे तो वो है, वो ऑल पार्टी के। खड़गे सर वो लोग कह रहे हैं कि एचएम रिप्लाई नहीं, वो लोग कह रहे हैं सर एचएम रिप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि स्पीकर कस्टोडियन है। 93 के बाद सर पहली बार इतने सस्पेंशन देखने को मिल रहे हैं खड़गे जी। अरे भाई तो बोल रहा हूँ ना, इतने सस्पेंशन कभी हुए भी नहीं और ये अच्छा भी नहीं लोकतंत्र के लिए। Now, even as this showdown continued over suspensions in the parliament, the opposition stooped to a new low. It was TMC MP Kalyan Banerjee who was seen mocking the vice president, and leading the shameful mocking was none other than Congress MP Rahul Gandhi, and India Alliance members were seen hooting, clapping and cheering while all of this was happening. Tearing into the opposition over the video, Rajya Sabha chairman and Vice President Jagdeep Dhankhar said that the act is condemnable, to say the least. Listen in to that response that came in from Vice President Jagdeep Dhankhar. मैंने कुछ देर पहले एक टीवी चैनल पर देखा है, गिरावट की कोई हद नहीं है, गिरावट की कोई हद नहीं है। आपके एक बड़े नेता एक सांसद के असंसदीय व्यवहार को वीडियो कर रहे थे। आपसे भी बहुत बड़े नेता हैं वो। मैं तो यही कह सकता हूं, सद्बुद्धि आए, कुछ तो सीमा होती होगी, कुछ जगह तो बख्शो, कुछ जगह तो बख्शो। All right, so there you heard Jagdeep Dhankhar responding to that whole act which happened at the Parliament complex, saying that this was unparliamentary on part of those MPs and that this is shameful, to say the least. Meanwhile, the BJP has also hit out at the opposition, saying that the latter is frustrated and therefore resorting to such antics. रवि किशन इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। आज कल्याण बनर्जी ने प्रदर्शन करते समय जगदीप धनखड़ जो कि सभापति हैं उनकी मिमिक्री की। रवि जी, आज जिस तरह से प्रदर्शन तो कर ही रहे थे, लेकिन सभापति की जगदीप धनखड़ की जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है उनकी मिमिक्री भी कर रहे थे, क्या कहेंगे? बहुत दुखद है। देखिए, सभापति महोदय हैं, उपराष्ट्रपति हैं, भारत को पूरा विश्व सम्मान दे रहा है, पूरी दुनिया भारत को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ देख रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी दिन रात काम कर रहे हैं देश को बनाने में, और देश बन भी रहा है, देश संवर भी रहा है, देश ताकतवर भी हो रहा है इकोनॉमिकली भी, और गरीबी भी हट रही है इस देश से। और वहाँ पर ये लोग बैठ के बाहर उसी सदन के, ये जो सबसे बड़ा मंदिर है भारत का, और वहाँ पर ये लोग मदारी का खेल कर रहे हैं। इन्होंने देखिए बता दिया कि 65 साल भी यही मदारी का खेल ये लोग करवाते रहे, और वही उन लोगों ने या कंटिन्यू यहाँ पे किया है। आज उससे पता चला। और सबसे दुखद ये कि राहुल गांधी जी जो इतने बड़े नेता हैं अपनी पार्टी के, वो उसको वीडियो शूट कर रहे हैं। तो इनको आना चाहिए सिनेमा में, भोजपुरी सिनेमा में कैमरामैन की कमी है, हिंदी सिनेमा में कमी है, और इन लोगों को आके वहाँ पर करना चाहिए। मदारीपन सदन से छोड़ के निकलना चाहिए। बहुत दुखद है इस तरह का। खबर तो ये भी आ रही है कि तीनों राज्यों के बाद इनको रात को उन लोगों को नींद नहीं आ रही है, सब लोग सड़क पे घूम रहे हैं कि ये क्या हो गया। ये सब मैं समझ सकता हूँ, दिमागी लेवल का भी झटका थोड़ा सा सबको असर बहुत किया हुआ है। आपको लगता है कि विपक्ष कहीं ना कहीं बौखलाया भी हुआ है, क्योंकि एक साथ इतने सस्पेंशंस हो गए हैं? ये कस्टोडियन स्पीकर है इस पार्लियामेंट सिक्योरिटी के, लेकिन आज उन्होंने प्रधानमंत्री को भी डिमीन किया, प्रधानमंत्री के पोस्टर्स लेकर के बैठे थे। अरे तो उसके लिए उनको अच्छे से तैयारी करना चाहिए, अच्छी स्पीचेस तैयार करनी चाहिए, सदन में हम लोगों से डिबेट करना चाहिए, फिर 2024 में वापस आने की तैयारी करनी चाहिए। ये तो एकदम ये लोग अलग लेवल पर जा रहे हैं। ये लोग अपने आप को स्वयं को 25-30 साल के लिए विपक्ष में रखने की पूरी प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप लोग क्या ये मुद्दा उठाएंगे, क्योंकि सभापति की मिमिक्री की है उन्होंने, लोकतंत्र के मंदिर का अपमान है एक तरीके से, आप लोग ये मुद्दा उठाएंगे? बीजेपी मुद्दा अभी देखिए, हमारे कुछ बिल, इंपॉर्टेंट बिल हैं, हम लोग उस पर फोकस कर रहे हैं। मुद्दा उठेगा, वो देश, पूरा देश इनको 2024 में देश ही इन लोगों को पूरा सही जवाब दे देगा। हम हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का कि अपने काम पे आप लोग ध्यान दें, ये सारी जोकरई और मदारीपन इन लोगों को करने दीजिए। तो यह है रवि किशन अपोजिशन पर और कल्याण बनर्जी की मिमिक्री पर। हर्षद चंदवानी फॉर रिपब्लिक टीवी। And here's a look at news in brief from across the country, calling out the politics over parliamentary security breach. The Prime Minister and the BJP parliamentary lead said
that the opposition MPs are rattled after dropping in state polls, adding that opposition's conduct will ensure its numbers go down in 2024 and that some parties in a way backing the breach is as dangerous as the breach itself. A day after holding one-on-one meet with Mamata Banerjee, Arvind Kejriwal held one-on-one meet with MK Stalin this morning. The meet comes as India Alliance is all set to hold its 4th meeting in the national capital in a while from now. As probe into Parliament security breach picks up pace, the Delhi Police Special Cell recreated the exact scene of crime. On Saturday, the inquiry panel will now be recording the statement of the 8 security personnel who'd been suspended by the Lok Sabha Secretariat for security lapse. A day after NI crackdown on Rohingyas in JNK, the JNK police also conducted massive searches in the valley. This after FIRs were lodged at various police stations, highlighting those accused of sheltering individuals from outside the nation. Posters featuring Bihar Chief Minister Nitish Kumar that were put up in Patna ahead of the India Alliance meet were seen. This is the 4th opposition meet that would take place today. While there's been no consensus on who is going to be leading the alliance, the discussion today will likely revolve around seat sharing formula. Another infiltration bid was spoiled by the JNK police and the BSF in a joint operation in Punjab. The BSF and Punjab police intercepted a suspected drone along with 1 packet of contraband items of heroin near a village in Amritsar. Severe waterlogging was seen in parts of Tuticorin as the area received heavy rainfall under the influence of cyclone circulation. Rescue operations have been on in full swing in Tirunelveli after heavy rains wreaked havoc in the region. Speaking on employment opportunities in Ayodhya, DM of the Holy City said that there's been a massive rise in employment opportunities over the past few months in the lead up to the Ayodhya temple inauguration. Meanwhile, President Draupadi Murmu extended her greetings to the citizens on Goa Liberation Day. Heading into a very short break, coming up on the other side, the latest on probe into Liquorgate. Sources suggest Kejriwal set to skip ED summons once again, cites 10-day Vipassana course.
Petitions of the Muslim side regarding the ownership between the Gyanvapi Mosque and the Kashi Vishwanath Temple in Varanasi. In fact, the court has stated that ruled that it does not fall under the ambit of the Places of Worship Act. Listen in to the reaction that's coming from the Hindu side on the Allahabad High Court verdict. माननीय उच्च न्यायालय ने आज जो मुस्लिम पक्ष के द्वारा 5 रिट याचिकाएं दाखिल की गई थी उन सबको निरस्त कर दिया गया और जो लोअर कोर्ट का आदेश पारित किया गया है उसको एफर्म कर दिया गया। कोर्ट के द्वारा यह कहा गया है कि यह जो वाद संख्या 610 सन 1991 है वह सेक्शन 4 प्लेसेज ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजन एक्ट 1991 से बाधित नहीं है और यह सूट चलेगा क्योंकि 15 अगस्त 1947 को 15 अगस्त 1947 को जो यह निर्णय करना है कि मौके की धार्मिक स्थिति मंदिर की थी या मस्जिद की थी, इसके लिए माननीय उच्च न्यायालय ने यह आज कहा है कि किसी भी धार्मिक स्थल का डुअल धार्मिक स्वरूप नहीं हो सकता, या तो वह मंदिर का होगा या मस्जिद का होगा, लेकिन इसको निर्धारित करने के लिए साक्ष्य की आवश्यकता होगी और लोअर कोर्ट को डायरेक्ट किया कि इस पर साक्ष्य लें कि 15 अगस्त 1947 को उसकी धार्मिक स्थिति क्या थी और यह भी निर्णित किया कि चूंकि इतने वर्ष हो गए हैं, यह वाद इतना विलंबित हुआ है, इसलिए लोअर कोर्ट को डायरेक्ट किया कि 6 महीने के अंदर इस केस को डिसाइड करें। यह भी कहा है कि यह केस 2 इंडिविजुअल के बीच में नहीं है बल्कि यह नेशनल इम्पोर्टेंस का केस है और 2 बड़े समुदायों के बीच का केस है और इतना विलंब हो चुका है जो नेशनल हित में नहीं है, इसलिए लोअर कोर्ट को डायरेक्ट किया कि 6 माह के अंदर इसको निर्णित करें। अभी कोर्ट ने यह भी कहा कि एएसआई सर्वे का जो आदेश लोअर कोर्ट ने पारित किया है वह भी पुष्टिकृत किया जाता है और उस आदेश के अंतर्गत जो भी बिंदुओं पर एएसआई ने दूसरे केस में केस फाइल किया है, जो रिपोर्ट फाइल किया है वह सेम रिपोर्ट इस केस में भी फाइल की जाएगी और यह देखा जाएगा कि उस आदेश के अंतर्गत जो एफर्म हुआ है उसके अंतर्गत कोई सर्वे का कार्य अधूरा रह गया है तो उसको भी एएसआई पूर्ण करके और इस केस में अपनी रिपोर्ट दाखिल करेगी। बिल्कुल करेगी, खुदाई करने का आदेश है। आपकी मेन प्ली क्या थी? सभी मेन प्ली थी कि यह हिंदुओं का स्थान है, भगवान शंकर का मंदिर है, भगवान शंकर स्वयं विराजमान है वहाँ, क्योंकि वह भगवान स्वयंभू हैं, जमीन से ही निकले हैं और वहीं बैठे हुए हैं, अनादिकाल से अब तक आज भी बैठे हुए हैं, इसलिए उसके धार्मिक स्वरूप मंदिर का है और हिंदुओं को इसमें पूजा पाठ इत्यादि करने का और इस मंदिर को पुनर्निर्माण करने और मरम्मत इत्यादि हर प्रकार का करने का उन्हें अधिकार है, यह कहा गया था और कोर्ट ने इस सारी चीज़ों को मान लिया है। सर, सुप्रीम कोर्ट तोड़ा जा सकता है, तोड़ने के लिए ही ये वाद किया गया है और वाद में न्यायालय आदेश देगी तो वह टूट जाएगा। Slipping in a very short break, coming up on the other side, the latest on Parliament action today. Ruckus sloganeering complete showdown in Parliament. More than 100 opposition MPs suspended for the remainder of the session. And opposition stoops to new low after suspensions. Rahul leads mocking of Vice President Dhankar, calls it shameful.
breaking right now. Rocker sloganeering. Complete showdown in Parliament. More than 100 opposition MPs suspended from Lok Sabha. Opposition stoops to a new low after suspensions. Rahul leads mocking of Vice President. Dhankar calls it shameful. Prime Minister hits at opposition, says India alliance frustrated after 3-state drubbing. With over 100 MPs suspended, India alliance in huddle mode now, set to hold key meeting. Sources suggest Kejriwal set to skip ED summons once again, cites Vipassana course. Yet another win for Hindu side. Allahabad High Court rejects petition challenging Gyanvapi survey. We're live and breaking. I'm Shivangi Shukla getting you the latest. Big showdown over Parliament breach continues and over suspensions continues in the Parliament. But it looks like the opposition has now stooped to a new law. TMC MP Kalyan Banerjee, who by the way is suspended, was seen mocking the Vice President, and leading this shameful mocking was Rahul Gandhi himself. And India Alliance members were seen hooting, clapping, and even cheering on. Those visuals coming in on your screen, viewers, about what really happened, where you can clearly see viewers, that a suspended TMC MP Kalyan Banerjee has mimicked Rajya Sabha chairman Jagdeep Dhankhar on Tuesday outside the Parliament, while the Congress leader Rahul Gandhi was seen filming the entire episode. Now you can see that these MPs are protesting outside the Parliament against a mass suspension from Lok Sabha and Rajya Sabha. And you can see that as he's mimicking the Rajya Sabha chairman Jagdeep Dhankhar and the Vice President of India, you can see how that everybody else is bursting into laughter. Let's go ahead, viewers, and play out exactly what happened. मैंने कुछ देर पहले एक टीवी चैनल पर देखा है, गिरावट की कोई हद नहीं है, गिरावट की कोई हद नहीं है। आपके एक बड़े नेता एक सांसद के असंसदीय व्यवहार को वीडियो कर रहे थे। आपसे भी बहुत बड़े नेता हैं वो। मैं तो यही कह सकता हूं, सद्बुद्धि आए। कुछ तो सीमा होती होगी, कुछ जगह तो बख्शो, कुछ जगह तो बख्शो। मैंने कुछ देर पहले एक टीवी चैनल पर देखा है, गिरावट की कोई हद नहीं है, गिरावट की कोई हद नहीं है। आपके एक बड़े नेता एक सांसद के असंसदीय व्यवहार को वीडियो कर रहे थे। आपसे भी बहुत बड़े नेता हैं वो। मैं तो यही कह सकता हूं, सद्बुद्धि आए। कुछ तो सीमा होती होगी, कुछ जगह तो बख्शो, कुछ जगह तो बख्शो। And hearing out at the opposition, the BJP has now said that the opposition is frustrated and therefore is resorting to such antics. Listen in. रवि किशन इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। आज कल्याण बनर्जी ने प्रदर्शन करते समय जगदीप धनखड़ जो कि सभापति है उनकी मिमिक्री की। रवि जी, आज जिस तरह से प्रदर्शन तो कर ही रहे थे, लेकिन सभापति की जगदीप धनखड़ की जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है उनकी मिमिक्री भी कर रहे थे, क्या कहेंगे? बहुत दुखद है। देखिए, सभापति महोदय हैं, उपराष्ट्रपति हैं, भारत को पूरा विश्व सम्मान दे रहा है।
पूरी दुनिया भारत को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ देख रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी दिन रात काम कर रहे हैं देश को बनाने में, और देश बन भी रहा है, देश संवर भी रहा है, देश ताकतवर भी हो रहा है इकोनॉमिकली भी, और गरीबी भी हट रही है इस देश से। और वहाँ पर ये लोग बैठ के बाहर उसी सदन के, ये जो सबसे बड़ा मंदिर है भारत का, वहाँ पर ये लोग मदारी का खेल कर रहे हैं। इन्होंने देखिए बता दिया कि 65 साल भी यही मदारी का खेल ये लोग करवाते रहे, और वही उन लोगों ने कंटिन्यू यहाँ पे किया है। आज उससे पता चला, और सबसे दुखद ये कि राहुल गांधी जी जो इतने बड़े नेता हैं अपनी पार्टी के, वो उसको वीडियो शूट कर रहे हैं। तो इनको आना चाहिए सिनेमा में, भोजपुरी सिनेमा में कैमरामैन की कमी है, हिंदी सिनेमा में कमी है, और इन लोगों को आके वहाँ पर करना चाहिए। मदारीपन सदन से छोड़ के निकलना चाहिए। बहुत दुखद है इस तरह का। खबर तो ये भी आ रही है कि तीनों राज्यों के बाद इनको रात को उन लोगों को नींद नहीं आ रही है, सब लोग सड़क पे घूम रहे हैं कि ये क्या हो गया। ये सब मैं समझ सकता हूँ, दिमागी लेवल का भी झटका थोड़ा सा सबको असर बहुत किया हुआ है। आपको लगता है कि विपक्ष कहीं ना कहीं बौखलाया भी हुआ है, क्योंकि एक साथ इतने सस्पेंशंस हो गए हैं? ये कस्टोडियन स्पीकर है इस पार्लियामेंट सिक्योरिटी के, लेकिन आज उन्होंने प्रधानमंत्री को भी डिमीन किया, प्रधानमंत्री के पोस्टर्स लेकर के बैठे थे। अरे तो उसके लिए उनको अच्छे से तैयारी करना चाहिए, अच्छी स्पीचेस तैयार करनी चाहिए, सदन में हम लोगों से डिबेट करना चाहिए, फिर 2024 में वापस आने की तैयारी करनी चाहिए। ये तो एकदम ये लोग अलग लेवल पर जा रहे हैं। ये लोग अपने आप को स्वयं को 25-30 साल के लिए विपक्ष में रखने की पूरी प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप लोग क्या ये मुद्दा उठाएंगे, क्योंकि सभापति की मिमिक्री की है उन्होंने, लोकतंत्र के मंदिर का अपमान है एक तरीके से, आप लोग ये मुद्दा उठाएंगे? बीजेपी मुद्दा अभी देखिए, हमारे कुछ बिल इंपॉर्टेंट बिल हैं, हम लोग उस पर फोकस कर रहे हैं। मुद्दा उठेगा, वो देश, पूरा देश इनको 2024 में देश ही इन लोगों को पूरा सही जवाब दे देगा। हम हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का कि अपने काम पे आप लोग ध्यान दें, ये सारी जोकरई और ईमानदारीपन इन लोगों को करने दीजिए। तो ये है रवि किशन अपोजिशन पर और कल्याण बनर्जी की मिमिक्री पर। हर्षद चंदवानी फॉर रिपब्लिक टीवी। So we saw that a TMC MP, who was suspended by the way, mimicked the chairman, mimicked the Rajya Sabha chairman, and after this a big mega political storm has now erupted over the mocking video. Listen into these reactions of the India Alliance leaders and how they are trying to justify how the Rajya Sabha chairman and the Vice President of India was mimicked by a suspended TMC MP. Been suspended, Sir Farooq sir, including you. What do you have to respond to it now? There's no opposition. You see, that's one thing great about this republic, that for the first time in the history of this nation, opposition has been suspended. Entire opposition is suspended, sir. The strange thing is, what are we doing? What are we here for? To raise people's problems, to see people's things are met. That's why people have sent us here. Now, because of what happened, there was a breach here of security. Now they said, for God's sake, let the Home Minister come and give a statement. What would happen? We'd all be sitting there. We would not be shouting because he will say things. That's what we all want. Some controversial remarks were made for Speaker at the Makar Dwar, sir. Let me tell you, I'm sorry. Yes, sir. I am not against the Speaker. He's a very great man. He's a gentle person. I don't know. I haven't heard any remarks like this, so I don't know. So this is Farooq Abdullah on his suspension. Harshad Zanwani for Republic TV. All right, viewers, let's go straight to Madhurima. Madhurima is joining us live right now. Madhurima has been on the ground getting us all the top details coming in. Madhurima, I'm coming to you at this point of time. And very, very shocking what we are seeing. Now, what exactly was a TMC MP making fun of exactly, Madhurima? If you could take our viewers through that. Because we saw that he was making some hand movements while some people, the other MPs were laughing at the same time. And these are all suspended MPs from this Parliament winter session, Madhurima. Well, Shivangi, what happened today is indeed hapless inside the premises of the Parliament. What needs to be seen here is that senior TMC MP, Mr. Kalyan Banerjee, was seen mocking and mimicking the Vice President of our country. He was making fun of, that how through his hand gestures that you're talking about, he was making a fun of a condition that, okay, my spine is okay.
high and I am very tall. This is how he was trying to mimic the vice president of our country. And what was more appalling at that time, Shivangi, was the way the entire opposition, all the leaders who had gathered at that specific point to raise their voice against the mass suspension, they were all seen laughing along on the mockery of the vice president of the country. The second issue that was more serious was that how the leader, the senior leader of the opposition party, that is the Congress party, Mr. Rahul Gandhi, he was found enjoying that entire mimicry session that was happening there inside the premises of the parliament, and was not only enjoying it, was also filming it. However, the opposition has not reacted to this particular statement. But the Vice President of our country, Mr. Jagdeep Dhankhar, the chair of the Rajya Sabha, has in fact expressed his pain and has said that there has to be some limit to the laws one can resort to. And he's highlighted that he saw the bit on the television by Mr. Kalyan Banerjee, and he was more pained by the way Mr. Rahul Gandhi was filming it. He did not name any leader in specific, but he did assert over the fact that the entire bit of Mr. Banerjee mimicking him was unfortunate and should not have, this incident should not have occurred. So we'll have to wait and watch as to how the opposition is going to react to it, because we'll be questioning the opposition regarding that why all the senior leaders of the parliament that represent the country were there mocking a constitutional post holder, and at the same time the BJP has also taken upon them to to criticize the opposition as to that this is the new law that the opposition has resorted to. They have said that this is nothing but frustration speaking on the part of opposition, and that they know that they have nothing to show for 2024. We heard Mr. Ravi Kishan. He said that instead of preparing debates, raising pertinent points, it is the opposition creating the mockery, making the mockery of a constitutional post. It is condemnable, and that he also highlighted that the Prime Minister has also expressed concern about the way the entire security breach has also been handled, and he is asked to focus on the development of the country rather than minting political benefit out of such incidents. Shivangi. All right, thank you so much for getting us those details coming in. And right now, Madhurima, thank you for getting those details coming in. Let's move ahead to the other breaking story we are tracking right now. Some more developments coming in as we see that so many MPs, 100 plus MPs have been suspended in this entire session. Latest development coming in, a meeting is underway at Speaker's Chamber. Sources have informed that Home Minister Shah and Parliamentary Affairs Minister Prahlad Joshi are present. This comes against the backdrop of suspension of more than 100 MPs. Let's go to Abhishek Kapoor, Senior Executive Editor, joining us for more. Abhishek, what we see right now is a huge number of MPs who have been suspended, unprecedented. But what is really happening? A meeting is also taking place. This is between, from what we have learned, Home Minister Shah and Parliamentary Affairs Minister Prahlad Joshi. Well, Shivangi, we can know about the pandemonium in Parliament in both the houses and the mass suspensions that we have seen, subsequent escalation by the opposition. Remember, this is happening in the chamber of the Lok Sabha Speaker, and Minister Amit Shah has rushed there. I also Parliamentary Affairs Minister Prahlad Joshi has also the leader of the Treasury benches in the Rajya Sabha, Piyush Goyal, Commerce Minister, and on the floor strategy and how to take legislative agenda forward. Remember, in fact, today the three core bills, the IPC, CRPC, and Evidence Act was slated to come up. The actions we have seen, obviously, and with now the entire opposition suspended, the government has to think or rethink its strategy, and that's why this meeting happening. This escalation was expected, or it has happened along the expected line. Government response in terms of salvaging the legislature would be interesting to see. And watch out for the meeting essentially happening to brainstorm on how to take things forward from here. So Lok Sabha Speaker along with Union Home Minister Amit Shah
Parliamentary Affairs Minister. Right, and Abhishek, you know, as this key meeting is taking place in the Speaker's chamber, if you could take our viewers through exactly what you think, according to you, because you would have a great idea about this, what would the meeting be about? Because, you know, we have been seeing that the Parliament, the PM Modi has said before every session, in fact, even the winter session, that please do not create ruckus to the opposition. But they do that again and again in some pretext or the other. This time it was over the Parliament breach issue, Abhishek. Then obviously they have not also the government maintains that in this issue of security in the parliament. Abhishek, we're having a little problem with your audio line. We're having some problem with your audio line. I'll come back to you in just a moment. Abhishek Kapoor, our senior executive editor, giving us a fresh perspective on what really is happening as so many 100+ MPs have been suspended in this winter session itself. We are seeing that a meeting is taking place. Sources have told us that Home Minister Shah and the Parliamentary Affairs Minister Prahlad Joshi are present at that meeting, and this coming in the backdrop of more than 100 MPs being suspended. Now, Home Minister and Prahlad Joshi, Parliamentary Affairs Minister, are in this meeting, and we have to wait and watch really what comes out of this meeting. And this is happening inside as we are seeing that the Parliament MPs of the opposition are making a huge ruckus and even going ahead and mocking the Rajya Sabha chairman and the Vice President of India, Jagdeep Dhankhar. Let's move ahead, viewers, to the other story we are tracking. The Indian Air Force helicopters are deployed for humanitarian assistance and disaster relief missions in Tamil Nadu due to unprecedented rains in the last 24 hours. In a video released by the Defence Ministry, PRO, 4 passengers, including a pregnant woman and a baby, around 1.5 years old, were taken safely to Madurai. Calling out the politics over parliamentary security breach, PM Modi at the BJP parliamentary meet said that the opposition MPs are rattled after dropping in state polls, adding that opposition's conduct will ensure its numbers go down in 2024, and the some parties in a way backing the breach. It is as dangerous as the breach itself. With fireworks continuing in the parliament, suspended MPs also staged protests at the Gandhi statue calling for the suspensions to be revoked, and a statement by the Home Minister on security breach matter. The BJP called on the opposition MPs for disrupting the parliament's proceedings. Speaking on the unruly behaviour displayed by the opposition, Dharmendra Pradhan said that such a behaviour is an insult to the Prime Minister. Arvind Kejriwal is likely to skip ED summons on December 21st in the Delhi excise policy scam. The reason cited by the sources in the Aam Aadmi Party is Kejriwal has to attend a 10-day Vipassana course. Security has been heightened in the UP Assembly days after the Parliament security breach incident. A committee has been formed under the chairmanship of an Additional Director General of Police. State-of-the-art security arrangements will now be made in Vidhan Bhavan, and rules for issuing vehicle passes near the assembly will be made strict. A day after NIA crackdown on Rohingyas in Jammu and Kashmir police conducted massive searches in the valley. This after FIRs have been launched at various police stations, highlighting those accused of sheltering individuals from outside the nation. डिटेल्स आई नहीं, जब एक बार पूरी सर्चेस कंप्लीट हो जाएंगे। कहाँ पे हो रहा है, कितनी जगह? 7 पुलिस स्टेशन है हमारे, एक ये छन्नी है, सतवारी है, नवाबाद है, बहू फोर्ट है, बागे बहू है, नगरोटा है, दोमाना है। जी जी, तो क्यों है, मतलब जो ये चेकिंग हो रही है किस लिए हो रही है? चेकिंग यही कि देख रहे हैं कि इनके पास किस तरह के डॉक्यूमेंट्स हैं, किसने उनको डॉक्यूमेंट को प्रोवाइड करने में मदद की होगी, फिर वो आगे इन्वेस्टिगेट करेंगे।
Latest developments in Belgavi assault case. The CID will be visiting the crime scene today. A team led by CID DIG Sudhir Kumar Reddy is investigating the case. CID officials will collect information about the incident from victim's family today. Viewers, much more coming up on the side. Sources suggest Kejriwal is set to skip ED summons once again because he needs to go for Vipassana course. Yet another win for Hindu side. Allahabad High Court rejects petition challenging Gyan Vapi survey. Stay tuned to India's #1 news channel, Republic TV. The Ministry of Commerce, Government of India has conferred the National Award for Innovation on Amity School out of 10,000 schools in India with Atal Tinkering Labs, a testimony to Amity's focus on instilling science. सीएम भगवंत मान से जानेंगे पंजाब के विकास की गाथा। कृषि, रोजगार और निवेश से क्यों चमक रहा पंजाब का माथा। चहुमुखी विकास है सीएम भगवंत मान का वादा। हम उनसे ही सुनेंगे अब क्या है उनका इरादा। बढ़ता पंजाब इस सोमवार सुबह 10:30 बजे से सिर्फ रिपब्लिक भारत पर। संतों का पंजाब, दिलदारों का पंजाब, देश का अनाज भंडार पंजाब, बिजनेस में तरक्की करता पंजाब, देश को सफल बनाता पंजाब। देखिए हमारे साथ बढ़ता पंजाब। सीएम भगवंत मान से जानेंगे पंजाब के विकास की गाथा। कृषि, रोजगार और निवेश से क्यों चमक रहा पंजाब का माथा। चहुमुखी विकास है सीएम भगवंत मान का वादा। हम उनसे ही सुनेंगे अब क्या है उनका इरादा। बढ़ता पंजाब इस सोमवार सुबह 10:30 बजे से सिर्फ रिपब्लिक भारत पर। संतों का पंजाब, दिलदारों का पंजाब, देश का अनाज भंडार पंजाब, बिजनेस में तरक्की करता पंजाब, देश को सफल बनाता पंजाब। देखिए हमारे साथ बढ़ता पंजाब। Ahead and tell you what's happening in the Gyan Vapi Mosque body petitions. Now what we see is that the court, Allahabad High Court, has gone ahead, rejected the petitions of the Muslim side regarding the ownership between the Gyan Vapi Mosque and the Kashi Vishwanath Temple in Varanasi. This is a big win coming in, viewers, for the Hindu side. Let's go ahead and play out all the reactions coming in at this point of time of the story. माननीय उच्च न्यायालय ने आज जो मुस्लिम पक्ष के द्वारा 5 रिट याचिकाएं दाखिल की गई थी उन सबको निरस्त कर दिया गया और जो लोअर कोर्ट का आदेश पारित किया गया है उसको एफर्म कर दिया गया। कोर्ट के द्वारा यह कहा गया है कि यह जो वाद संख्या 610 सन 1991 है वह सेक्शन 4 प्लेसेज ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजन एक्ट 1991 से बाधित नहीं है और यह सूट चलेगा क्योंकि 15 अगस्त 1947 को 15 अगस्त 1947 को जो
यह निर्णय करना है कि मौके की धार्मिक स्थिति मंदिर की थी या मस्जिद की थी। इसके लिए माननीय उच्च न्यायालय ने यह आज कहा है कि किसी भी धार्मिक स्थल का डुअल धार्मिक स्वरूप नहीं हो सकता, या तो वह मंदिर का होगा या मस्जिद का होगा, लेकिन इसको निर्धारित करने के लिए साक्ष्य की आवश्यकता होगी। और लोअर कोर्ट को डायरेक्ट किया कि इस पर साक्ष्य लें कि 15 अगस्त 1947 को उसकी धार्मिक स्थिति क्या थी। और यह भी निर्णित किया कि चूंकि इतने वर्ष हो गए हैं, यह वाद इतना विलंबित हुआ है, इसलिए लोअर कोर्ट को डायरेक्ट किया कि 6 महीने के अंदर इस केस को डिसाइड करें। यह भी कहा है कि यह केस 2 इंडिविजुअल के बीच में नहीं है, बल्कि यह नेशनल इम्पोर्टेंस का केस है और 2 बड़े समुदायों के बीच का केस है, और इतना विलंब हो चुका है जो नेशनल हित में नहीं है। इसलिए लोअर कोर्ट को डायरेक्ट किया कि 6 माह के अंदर इसको निर्णित करें। अभी कोर्ट ने यह भी कहा कि एएसआई सर्वे का जो आदेश लोअर कोर्ट ने पारित किया है वह भी पुष्टिकृत किया जाता है, और उस आदेश के अंतर्गत जो भी बिंदुओं पर एएसआई ने दूसरे केस में केस फाइल किया है, जो रिपोर्ट फाइल किया है, वह सेम रिपोर्ट इस केस में भी फाइल की जाएगी, और यह देखा जाएगा कि उस आदेश के अंतर्गत जो एफर्म हुआ है उसके अंतर्गत कोई सर्वे का कार्य अधूरा रह गया है तो उसको भी एएसआई पूर्ण करके और इस केस में अपनी रिपोर्ट दाखिल करेगी। खुदाई भी कर सकती है? बिल्कुल करेगी, खुदाई करने का आदेश है। आपकी मेन प्ली क्या थी? ढांचा है उसको सभी मेन प्ली थी कि यह हिंदुओं का स्थान है, भगवान शंकर का मंदिर है, भगवान शंकर स्वयं विराजमान है वहाँ, क्योंकि वह भगवान स्वयंभू हैं, जमीन से ही निकले हैं और वहीं बैठे हुए हैं, अनादिकाल से अब तक आज भी बैठे हुए हैं। इसलिए उसके धार्मिक स्वरूप मंदिर का है और हिंदुओं को इसमें पूजा पाठ इत्यादि करने का और इस मंदिर को पुनर्निर्माण करने और मरम्मत इत्यादि हर प्रकार का करने का उन्हें अधिकार है, यह कहा गया था और कोर्ट ने इस सारी चीज़ों को मान लिया है। सर, सुप्रीम कोर्ट तोड़ा जा सकता है, तोड़ने के लिए ही ये वाद किया गया है और वाद में न्यायालय आदेश देगी तो वह टूट जाएगा। Much more coming up. Rockers, sloganeering, complete showdown in Parliament. More than 100 opposition MPs suspended from the Lok Sabha. Opposition stoops to a new low after suspensions. Rahul leads, mocking of Vice President. Dhankar calls it shameful. Stay tuned. सीएम भगवंत मान से जानेंगे पंजाब के विकास की गाथा। कृषि, रोजगार और निवेश से क्यों चमक रहा पंजाब का माथा। चहुमुखी विकास है सीएम भगवंत मान का वादा। हम उनसे ही सुनेंगे अब क्या है उनका इरादा। बढ़ता पंजाब इस सोमवार सुबह 10:30 बजे से सिर्फ रिपब्लिक भारत पर। सीएम भगवंत मान से जानेंगे पंजाब के विकास की गाथा। कृषि, रोजगार और निवेश से क्यों चमक रहा पंजाब का माथा। चहुमुखी विकास है सीएम भगवंत मान का वादा। हम उनसे ही सुनेंगे अब क्या है उनका इरादा। बढ़ता पंजाब इस सोमवार सुबह 10:30 बजे से सिर्फ रिपब्लिक
be even better. संतों का पंजाब, दिलदारों का पंजाब, देश का अनाज भंडार पंजाब, बिजनेस में तरक्की करता पंजाब, देश को सफल बनाता पंजाब। देखिए हमारे साथ बढ़ता पंजाब। संतों का पंजाब, दिलदारों का पंजाब, देश का अनाज भंडार पंजाब, बिजनेस में तरक्की करता पंजाब, देश को सफल बनाता पंजाब। देखिए हमारे साथ बढ़ता पंजाब। सीएम भगवंत मान से जानेंगे पंजाब के विकास की गाथा। कृषि, रोजगार और निवेश से क्यों चमक रहा पंजाब का माथा। चहुमुखी विकास है सीएम भगवंत मान का वादा। हम उनसे ही सुनेंगे अब क्या है उनका इरादा। बढ़ता पंजाब इस सोमवार सुबह 10:30 बजे से सिर्फ रिपब्लिक भारत पर। सीएम भगवंत मान से जानेंगे पंजाब के विकास की गाथा। कृषि, रोजगार और निवेश से क्यों चमक रहा पंजाब का माथा। चहुमुखी विकास है सीएम भगवंत मान का वादा। हम उनसे ही सुनेंगे अब क्या है उनका इरादा। बढ़ता पंजाब इस सोमवार सुबह 10:30 बजे से सिर्फ रिपब्लिक भारत पर। Whether the India Inc. animal spirit is back? Absolutely. And from an auto perspective, I can tell you that we have a very bullish view of the Indian auto industry, both because the motorization of India. The headlines. Ruckers sloganeering complete showdown in the parliament. More than 100 opposition MPs are suspended from the parliament. The opposition stooping to a new low after the suspension. Rahul Gandhi leading the mocking of the Vice President. Dhankar calls this, quote-unquote, shameful. The Prime Minister hitting out at the opposition. He says the India alliance frustrated after their drubbing in 3 states. The India alliance swings into a huddle mode, holding an emergency meet over suspensions in the national capital. Arvind Kejriwal is expected to not appear before the Enforcement Directorate. He says, I already had planned to be a part of a Vipassana session. It is yet another victory for the Hindu side. The Allahabad High Court rejecting a petition challenging the Gyanvapi survey. So even as you see the ruckus that continues to be reported out of the parliament almost every day for the last few days, ever since you've seen that parliament security breach, the opposition member of parliament continue to protest, voice their concerns, and they say we are not being heard. So even as the House convened earlier today, we have seen more suspensions, and this totals the number of members of parliament that have been suspended to 140 plus. So largely, most of the opposition is already out of the parliament. The chair says that this is going by the rule book.
because all these are members of parliament who've resorted to indiscipline. On the other side, these are images right now playing out on the right of your screens, where apparently this is a TMC MP. Kalyan Banerjee was seen mocking the Vice President and leading the shameful mocking. On the other right, you will see, is also Congress's Rahul Gandhi. And we also have a reaction that have come in earlier from the Rajya Sabha chairman, the Vice President also, who says that whatever has happened is condemnable. मैंने कुछ देर पहले एक टीवी चैनल पर देखा है, गिरावट की कोई हद नहीं है, गिरावट की कोई हद नहीं है। आपके एक बड़े नेता एक सांसद के असंसदीय व्यवहार को वीडियो कर रहे थे। आपसे भी बहुत बड़े नेता हैं वो। मैं तो यही कह सकता हूं, सद्बुद्धि आए। कुछ तो सीमा होती होगी, कुछ जगह तो बख्शो, कुछ जगह तो बख्शो। मैंने कुछ देर पहले एक टीवी चैनल पर देखा है, गिरावट की कोई हद नहीं है, गिरावट की कोई हद नहीं है। आपके एक बड़े नेता एक सांसद के असंसदीय व्यवहार को वीडियो कर रहे थे। आपसे भी बहुत बड़े नेता हैं वो। मैं तो यही कह सकता हूं, सद्बुद्धि आए। कुछ तो सीमा होती होगी, कुछ जगह तो बख्शो, कुछ जगह तो बख्शो। And it's not just the BJP, but even its partners in the NDA, that is the LJP, Ramvilas Paswan, has responded to what has happened. We have two reactions coming in from the BJP MP Ravi Kishan, followed also by Chirag Paswan. रवि किशन इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। आज कल्याण बनर्जी ने प्रदर्शन करते समय जगदीप धनखर जो कि सभापति हैं उनकी मिमिक्री की। रवि जी, आज जिस तरह से प्रदर्शन तो कर ही रहे थे, लेकिन सभापति की जगदीप धनखर की जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है उनकी मिमिक्री भी कर रहे थे, क्या कहेंगे? बहुत दुखद है। देखिए, सभापति महोदय हैं, उपराष्ट्रपति हैं, भारत को पूरा विश्व सम्मान दे रहा है, पूरी दुनिया भारत को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ देख रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी दिन रात काम कर रहे हैं देश को बनाने में, और देश बन भी रहा है, देश संवर भी रहा है, देश ताकतवर भी हो रहा है इकोनॉमिकली भी, और गरीबी भी हट रही है इस देश से। और वहाँ पर ये लोग बैठ के बाहर उसी सदन के, ये जो सबसे बड़ा मंदिर है भारत का, और वहाँ पर ये लोग मदारी का खेल कर रहे हैं। इन्होंने देखिए बता दिया कि 65 साल भी यही मदारी का खेल ये लोग करवाते रहे, और वही उन लोगों ने कंटिन्यू यहाँ पे किया है। आज उससे पता चला, और सबसे दुखद ये कि राहुल गांधी जी जो इतने बड़े नेता हैं अपनी पार्टी के, वो उसको वीडियो शूट कर रहे हैं। तो इनको आना चाहिए सिनेमा में, भोजपुरी सिनेमा में कैमरामैन की कमी है, हिंदी सिनेमा में कमी है, और इन लोगों को आके वहाँ पर करना चाहिए। मदारीपन सदन से छोड़ के निकलना चाहिए। बहुत दुखद है इस तरह का। खबर तो ये भी आ रही है कि तीनों राज्यों के बाद इनको रात को उन लोगों को नींद नहीं आ रही है, सब लोग सड़क पे घूम रहे हैं कि ये क्या हो गया। ये सब मैं समझ सकता हूँ, दिमागी लेवल का भी झटका थोड़ा सा सबको असर बहुत किया हुआ है। आपको लगता है कि विपक्ष कहीं ना कहीं बौखलाया भी हुआ है, क्योंकि एक साथ इतने सस्पेंशंस हो गए हैं? ये कस्टोडियन स्पीकर हैं इस पार्लियामेंट सिक्योरिटी के, लेकिन आज उन्होंने प्रधानमंत्री को भी डिमीन किया, प्रधानमंत्री के पोस्टर्स लेकर के बैठे थे। अरे तो उसके लिए उनको अच्छे से तैयारी करना चाहिए, अच्छी स्पीचेस तैयार करनी चाहिए, सदन में हम लोगों से डिबेट करना चाहिए, फिर 2024 में वापस आने की तैयारी करनी चाहिए। ये तो एकदम ये लोग अलग लेवल पर जा रहे हैं। ये लोग अपने आप को स्वयं 25-30 साल के लिए विपक्ष में रखने की पूरी प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप लोग क्या ये मुद्दा उठाएंगे, क्योंकि सभापति की मिमिक्री की है उन्होंने, लोकतंत्र के मंदिर का अपमान है एक तरीके से, आप लोग ये मुद्दा उठाएंगे? बीजेपी मुद्दा अभी देखिए, हमारे कुछ बिल, इंपॉर्टेंट बिल हैं, हम लोग उस पर फोकस कर रहे हैं। मुद्दा उठेगा, वो देश, पूरा देश इनको 2024 में देश ही इन लोगों को पूरा सही जवाब दे देगा। हम हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का कि अपने काम पे आप लोग ध्यान दें, ये सारी जोकरई और ईमानदारीपन इन लोगों को करने दीजिए। तो यह रवि किशन अपोजिशन पर और कल्याण बनर्जी की मिमिक्री पर। हर्षद चंदवानी फॉर रिपब्लिक टीवी।
चिराग पासवान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। चिराग, आज और सस्पेंशन हुए, 40 से ऊपर सस्पेंशन बताए जा रहे हैं। ये मानिए कि लगभग पूरा लोकसभा अब अपोजिशन के बिना है, क्योंकि पूरा ऑलमोस्ट लोकसभा से अपोजिशन नेताओं को सस्पेंड कर दिया गया है। आप बाध्य करते हैं ऐसी कार्रवाई करने के लिए। बताइए कब तक सत्र को हंगामे की देन चढ़ते दिया जा सकता है? कई और कार्य हैं सदन में करने के लिए, कई और इम्पोर्टेंट बिल्स हैं जो कि सदन में लाने हैं। सांसदों के अपने अपने क्षेत्र से जुड़े हुए विषय हैं जिनको उठाना है। भाई, लोकसभा चुनाव से पहले यही एक फुल फ्लेजेड सेशन है। इसके बाद सिर्फ एक बजट का सेशन आएगा थोड़े दिनों के लिए। तो ऐसे में जब सांसद अपने क्षेत्र से जुड़े विषयों को नहीं उठाएंगे, इसीलिए विपक्षी सांसदों की संख्या इतनी कम होती जा रही है, क्योंकि उनके क्षेत्र के लोग भी तो देख रहे हैं। ये जितने सांसद सस्पेंड हुए, क्या इनकी जनता नहीं देख रही होगी कि इनको हमने चुना हमारे विषय उठाने के लिए, और ये सदन में तख्ती लेकर हंगामा कर रहे हैं? तो जब तक आप क्षेत्र से जुड़ी बातों को नहीं उठाएंगे, आप कीजिए ना हंगामा, कौन मना कर रहा है? पर एक समय सीमा तक रखिए। सिर्फ जिद पे अड़ जाना, एक सदन नहीं चलने देंगे, एक सत्र पूरा कि भाई प्रधानमंत्री जवाब दें, कभी जिद पे अड़ जाएंगे, वित्त मंत्री जवाब दें, कभी जिद पे अड़ जाएंगे कि भैया रक्षा मंत्री जवाब दें, आप गृह मंत्री जवाब दें। इसके लिए आप पूरा सत्र आप खत्म कर देते हैं, हंगामे की देन चढ़ा देते हैं। गलत है ये। लेकिन अपोजिशन कह रहा है कि उनके साथ दोहरा मापदंड अपनाया जा रहा है। स्पीकर के लिए कोई डेरोगेटरी रिमार्क्स नहीं यूज किए गए थे, जबकि हमने देखा कि कल्याण बनर्जी सभापति तक की मिमिक्री कर रहे थे। बिल्कुल कर रहे थे। और जिस तरीके से तख्तियों को लेकर प्ले कार्ड्स, ये कोई स्कूल का कोई वो थोड़ी चल रहा है, प्लेग्राउंड थोड़ी कि आप भैया प्ले कार्ड्स लेकर आप आ रहे हैं। और ये हर सांसद ने मिलकर इस पर सहमति दी थी कि हम लोग तख्तियों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, प्ले कार्ड्स को सदन के अंदर नहीं लाया जाएगा। सदन नियम कायदे कानूनों से चलता है ना, उसमें इस तरीके से ये लोग हंगामा करेंगे, इस तरीके से सदन के नियम कानूनों की धज्जियां उड़ाएंगे, तो कार्रवाई तो होगी ही। चिराग पासवान अपोजिशन नेताओं के सस्पेंशन। राजय सभा फॉर रिपब्लिक टीवी। And it's not just this particular video now that has apparently gone viral, but also the entire showdown that you have seen in the parliament that is being questioned by many. But how has the I-India alliance responded, the leaders responded to what has happened so far? Sit back and watch how they responded. Has been suspended, Sir Farooq sir, including you. What do you have to respond to it now? There's no opposition. You see, that's one thing great about this republic, that for the first time in the history of this nation, opposition has been suspended. Entire opposition is suspended, sir, today. The thing is, what are we doing? What are we here for? To raise people's problems. To see people's things are met. That's why people have sent us here. Now, because of what happened, there was a breach here of security. Now they said, for God's sake, let the Home Minister come and give a statement. What would happen? We'd all be sitting there. We would not be shouting because he will say things. That's what we all want. Some controversial remarks were made for Speaker at the Makar Dwar, sir. Let me tell you, I'm sorry. Yes, sir. I am not against the Speaker. He's a very great man. He's a gentle person. I don't know. I haven't heard any remarks like this, so I don't know. So this Farooq Abdullah on his suspension. Harshad Zulmani for Republic TV. देखिए, जो आचरण टीएमसी के सांसद ने किया है, भारत के उपराष्ट्रपति का मखौल बनाना, मजाक बनाना, उनकी बेइज्जती करना, इससे पूरे देश के लोकतंत्र का सर शर्म से झुक गया है। संसद नौटंकी की जगह नहीं है, संसद कोई ड्रामेबाजी की जगह नहीं है। विरोध करने के अपने तौर तरीके हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति का मजाक बनाना, उपराष्ट्रपति की तौहीन करना, उपराष्ट्रपति को बेइज्जत करना, मुझे लगता है कि ये स्वस्थ लोकतंत्र के लिए शोभा नहीं देता। Let's also get in our colleague Madhurima, who's been tracking all proceedings, and she joins us right now on the phone line. You know, Madhurima, many would say that what was the need to stoop down to this level? Because these are questions that the opposition again will have to respond to. Do we have absolutely any official reaction that has come in from Kalyan Banerjee himself, an apology, or perhaps a regret of what happened and why he should not have behaved like this?
is tight-lipped and has remained tight-lipped ever since this incident unraveled there inside the premises of the parliament. Remember that all of them, the entire opposition, had gathered over there to stage protest against the mass suspension. But what ensued later is something that we can all call unfortunate. They all were there to protest against the mass resignation, but all of a sudden we saw Mr. Kalyan Banerjee standing up and he started mimicking the vice president of our country, Deepthi. What needs to be seen here is that what is more remorseful over here is the behavior of senior Congress leader Rahul Gandhi as to how he was encouraging the entire act, and then of course that he went on to film it, and none of them have come forward to express any sort of regret, though the vice president expressing deep pain has suggested that how it was an attack below the belt, and how this entire decision of mimicking him is something that should not have been done, should be condemned. And of course the fact that Mr. Rahul Gandhi and Mr. Kalyan Banerjee, though he did not name anybody, but he said that both of them should have refrained from doing so, and that there has to be some limit decided before the opposition resort to such new laws every day. What are you saying? किस पर मीटिंग है? Okay, Madhurima there getting us more details of how there is still no clarity, no apology, and clearly no regret that has come in from the TMC on these images that you see there playing out on the right of your screens. And clearly remember, there's got to be a lot of burden on the man that you see there standing in the extreme right. He's Rahul Gandhi. Now, people are saying that what was the need for someone like him to stand there, jeer such kind of a behavior, even if it was taking place, and why did he believe that the first instinct was to take your phone out and have a full recording? Now, would that question also weigh on the mind of the INA Alliance leaders who are meeting right now in the national capital? Do remember, the last meeting of the alliance happened in Mumbai. And ever since then, because the Congress got busy in the 3 Hindi heartland elections, and again, questions were asked that what is the agenda of the INA Alliance? Will they have a convener? Will they name a face? Will there be a larger narrative that they all will agree on? Will we have details of the seat sharing and much more? These are images right now coming in from inside of the INA Alliance meeting that is happening at a hotel in the national capital. Abhishek is also joining us on the phone line, I'm told, and he'll give you a big picture of what to expect. Abhishek, every meeting of the INA Alliance, we are told, is very, very important. They tell us that, we are taking huge steps because the idea is to defeat Narendra Modi. But with just less than, 2.5 months left for the big battle of the Lok Sabha elections to begin, Abhishek, are they even looking prepared? Far from that, Deepthi, we have seen how the agenda setting of